Good evening, everyone. We'll start shortly. We'll start shortly, so please wait. And in case if you have any question, we have not started yet. All right. So now let's just begin. So welcome all in our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. In this webinar, we talk about the market performance during the week, but the main agenda is to identify the opportunities, the key levels for Nifty banking index, sectors to focus on, stocks to watch. Everything we'll cover in the next 20 minutes, followed by the Q&A session. So in case if you have any questions related to any particular theme, sector, post this presentation, you can ask during the Q&A. तो आप सभी का स्वागत है इस हमारे वीकली वेबिनार में। और इस वेबिनार का बेसिकली पर्पस यही है कि हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या तैयारी करें, किस तरीके से देखें, क्या एंटिसिपेटेड है निफ्टी में, कौन से लेवल्स ध्यान रखने चाहिए, बैंकिंग इंडेक्स में कौन से सेक्टर्स पे फोकस करें, कौन से स्टॉक्स एक पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। तो इनिशियल जो 20 मिनट हैं वो वेबिनार के हमारा उसी पे फोकस रहेगा। लास्ट के 10 मिनट में हम जो भी क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटेड टू एनी सेक्टर, एनी थीम, उस पे फिर टाइम अलाउ करेगा तो कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज भी होंगी तो देयर विल बी आंसर। सो लेट्स स्टार्ट with a disclaimer first that the information which we are going to share is not a trading or investment recommendation. Please check with your financial advisor before you make any decision based on the information shared. तो जो भी हम बात करने वाले हैं वो कोई भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो डिसाइड करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप बात करें। So this is the performance for the entire week. So after 3 weeks of consolidation correction, this week it turned out to be a good for both Nifty and Sensex. As you can see that roughly around 1.5% kind of a gains for both Nifty and Sensex. Sectorally also, majority of the sector on the positive side, IT leading the pack, followed by pharma, auto, energy and financials. While media and realty, they were slightly on the sidelines. Talking about top 5 gainers, losers, interesting pick, Asian Paints after long underperformance, a strong rebound, roughly around 11%. Then Adani Enterprise, Indigo, HCL and Geo. Losing side, Trend. Last week, we've discussed about Trend in the list of stocks, which could see fresh decline. So it turned out to be the biggest loser for the Nifty 50 basket this week. So 5% cut. Then we have Bajaj Finance, Tata Steel. This is Tata Motor Passenger Vehicle, TMPV, and Max Healthcare. So ये पूरे हफ्ते का लेखा जोखा है आपका, कि पूरा हफ्ता जो हमारा अभी गया, अभी जो आज के दिन खत्म हुआ, तो काफी हद तक एक अच्छा हफ्ता कहेंगे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। करीब 1.5% के गेन निफ्टी सेंसेक्स में आए। ज्यादा सेक्टर्स आपने पॉजिटिव साइड पे देखा, यहाँ पे कि आईटी में रिकवरी आई, जो कि साइड लाइन्स पे था, और साथ ही साथ जो दूसरे सेक्टर्स थे, चाहे वो फार्मा जो कि नहीं अभी तक परफॉर्म कर रहे थे, उनमें भी रिकवरी देखने को मिली। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक जो सरप्राइजेस थे या फिर इन्हें कहने की एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी जो देखने को मिली, वो एशियन पेंट जैसा नाम रहा। काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस तरीके की रिकवरी देखी और करीब करीब 11% के गेन्स इस हफ्ते एशियन पेंट ने दिखाए। वहीं पर ट्रेंड, जो लास्ट वीक हमने बात की थी इसी प्रेजेंटेशन में कि यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस है, वो इस वीक का निफ्टी का टॉप लूजर्स बना, करीब 5% के कट। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, मीन्स 2 नाम फ्रॉम द टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, और मैक्स हेल्थ केयर जो कि यहाँ पे नेगेटिविटी देखी। अब क्या एंटिसिपेटेड है इस वीक की तेजी के बाद? तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, दिस इज हाउ निफ्टी इज प्लेस्ड राइट नाउ। And last week we discussed about few things which turned out to be almost perfect, because 25,300 हमने उसकी बात की थी कि 25,300 का होल्ड होना जरूरी है अगर मार्केट में कोई भी रिकवरी देखनी है तो, अदरवाइज फिर 25,050 और शायद उससे भी नीचे के लेवल्स।
तो जो लास्ट वीक के जो लोज थे उसको डिफेंड करते हुए मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली रिकवरी दिखाई, एंड वी इंच क्लोजर टू very closer to the previous swing high. Means 26,000 के levels we have tested this week. Now, what all options that we have? So indications are favorable towards a new record high. Why I'm saying this? In the following slide, we have the reason. But this rotational participation from all the key sectors, banking index is already at record highs. We are seeing stability in IT. Sectors like pharma, energy, which was sitting on the sidelines earlier, they have started seeing, a selective participation, means heavyweights across sectors. So barring, let's say, select FMCG and small cap, all the key sectors are participating in the move. तो अभी जो क्या हो रहा है कि मार्केट में कंसोलिडेशन जो दिख रहा है ना, अगर आप ये इस 4 वीक को अगर आप ऐसे भी देख सकते हो कि मार्केट में एक, या फिर इस रैली के बाद जो एक करेक्शन है दोबारा से आप उन्हीं लेवल्स के पास आ रहे हैं, तो ये है तो एक कंसोलिडेशन ही ना, एक रेंज में ही है ना मार्केट। बट इंडिकेशन ये है कि ये रेंज ब्रेक होके हम नए हाई की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स ने नया हाई बना लिया है, जो कि फॉलोइंग स्लाइड में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आईटी में हमने देखा कि स्टेबिलिटी आ गई है। दूसरे जो सेक्टर्स अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, चाहे वो एनर्जी हो, वहां पे सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन है, फार्मा हो, वहां पे सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन है। मिड कैप इंडेक्स ने ऑलरेडी नया हाई बना दिया है। अब जो नहीं चल रहा है वो कुछ एक ले दे के स्मॉल कैप के आपके जो पैक है वो डेफिनेटली सप्रेस्ड है। जिसी का रीजन होता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में उतनी तेजी नजर नहीं आती जब तक कि इंडेक्स एक अच्छा ग्रीन में है, अपने रिकॉर्ड हाई के पास है। उस तरीके की तेजी आपको अपनी शायद पोर्टफोलियो में नहीं दिख रही हो, जिनके पास खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। राइट, उनको लग रहा होगा अभी भी मेरे स्टॉक्स तो यार 20-20% डाउन है, बट मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है, क्योंकि स्मॉल कैप नहीं चल रहा है। राइट, इंडिकेशन क्या है? दैट वी आर सेट फॉर न्यू रिकॉर्ड हाई। मींस 26,100 जब स्विंग हाई था लास्ट फर्स्ट, एंड देन 26,300। 300 इज बेसिकली अ फॉर्मेलिटी, मींस 500 is something that you should be eyeing. Downside 25,650 is the key make or break area. Means अगर 25,650 को हम ब्रेक करेंगे तो फिर कंसोलिडेशन और लंबा चलेगा, या फिर आप मान के चलिए कि 1-2 हफ्ते और यहाँ पे आप स्पेंड करेंगे। अगर नहीं, आपने 25,650 को अब ब्रेक नहीं किया, तो फिर मान के चलिए कि आप नए हाई के लिए 26,500 के लिए तैयार है मार्केट। राइट, तो इन अ वे दोनों ही पोजीशन में, चाहे अभी कंसोलिडेट करके जाए, चाहे फिर अभी यहाँ से निकल जाए, इंडिकेशन तेजी के साइड के ज्यादा है मार्केट में। तो 25,650 पहला, फिर 25,400 दूसरा, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है मार्केट के लिए, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं खासतौर से उनके लिए। राइट, अब ये क्यों कह रहे हैं? दैट्स द रीजन बेसिकली कि व्हाई वी आर maintaining this bullish tone, because banking index है ये ग्राफ, it's a daily graph, and we are at record high. Last week we, if you remember that, despite the negativity, we were bullish on the markets. And why we were bullish? Because banking was holding 20 EMA. हुआ क्या था कि लास्ट वीक भी जब हमने, आप जाएंगे हमारे चैनल पे, और जिन्होंने लास्ट टाइम भी ज्वाइन किया था उनको भी पता होगा कि हमने कहा था कि मार्केट में देखिए करेक्शन जरूर आया है लास्ट वीक, बट हम मंदी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंकिंग मंदी में नहीं है। जब तक बैंकिंग मंदी में नहीं आता तब तक मार्केट को एक अच्छा करेक्शन देना मुश्किल होता है। मीन्स और दूसरे कोई सेक्टर का उतना वेट ही नहीं है कि जो मार्केट को ज्यादा स्ट्रांगली पुश कर दे डाउन साइड पे। तो हुआ क्या कि बैंकिंग ने अपनी मजबूती को और एक्सटेंड किया, और हमने रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखा बैंकिंग इंडेक्स में। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन है? तो आपको याद होगा तो 58,500 की बात की थी हमने, 58,500 के बाद 60,000। अब जैसे कि धीरे धीरे ये रेंज, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, रेंज भी ब्रॉडन होती जाती है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको 59,500, 60,500 ये ऊपर के लेवल बन के आ रहे हैं, करीब करीब 2,000 पॉइंट यहाँ से ऊपर। वहीं पे आप 57,500, 57,200 टू बी प्रिसाइज, हमने लास्ट वीक की सपोर्ट की बात की थी, तो 157 का लो बना। अब वहां से मार्केट में रिकवरी आ गई। तो इस बार भी अपने को लगता है कि 57,200 के ही लो को हमको डिफेंड करना चाहिए। वो अगर ब्रेक हुआ तब जाके फिर मार्केट का मोमेंटम जाएगा। तो बेसिकली आपको मार्केट को अगर प्ले करना है तो बैंक निफ्टी को ध्यान रखिए अभी,
लार्जली, कि मार्केट का टोन खराब होने वाला है, कैसा रहने वाला है, बैंकिंग आपको क्लियर इंडिकेशन दे देगा। ठीक है, 57,500 57,200 जो आपका सपोर्ट एरिया है, जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक पॉजिटिव साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है अपने को, राइट। यस, इसमें एक चीज जो मिसिंग है कि जो इसमें हम कवर नहीं करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, वो है ग्लोबल मार्केट्स, राइट। ग्लोबल मार्केट्स में अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मीन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। मेजॉरिटी ऑफ द developed markets, they have done exceptionally well, especially the US. Now we have started seeing some sign of jitter, uh, early sign of jitter in US markets. So that may result in a bit of a volatility in our markets also, if not a sharp decline, but at least some volatility, right? So basis that there could be further consolidation, but broadly our view is not going to turn negative until we decisively break those critical levels, means 25,650 and 57,200 are the respective level for both Nifty and the banking index. देखिए, एक चीज जो कि हम इसमें प्रेजेंटेशन में कवर नहीं करते हैं, मतलब कवर इन द सेंस कि यहाँ पे आपको चार्ट पे नहीं दिख रहा है या स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, वो है ग्लोबल मार्केट्स। तो ग्लोबल मार्केट्स की अभी जरूरत भी नहीं पड़ रही थी, बिकॉज वहां पे सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। बट अब थोड़े से साइन आ रहे हैं यूएस मार्केट के खासतौर से कि कुछ पॉकेट्स में, खासतौर से जो एआई रिलेटेड जो वहाँ पे स्टॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा मूव कर चुके हैं, स्ट्रांगली मूव कर चुके हैं। तो वहाँ पे करेक्शन के इंडिकेशंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट भी वॉलेटाइल हो सकती है। बट अभी तक कोई ऐसा मेजर चांस अभी तक दिखा नहीं है, एक्सेप्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जिसकी वजह से आज हमारी मार्केट गैप डाउन खुली थी इनिशियली, राइट। तो वो एक फैक्टर रह सकता है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉशन रखे हम मार्केट में। बट ओवरऑल कोई चेंज नहीं है व्यू में, जैसे हमने पहले भी बात की कि ब्रॉडली पॉजिटिव साइड पे ही रखना है अपने को, और जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग थीम्स हैं, उनमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, राइट। तो बैंकिंग का भी वही 59,500 60,500 अपसाइड पे मेंटेन्ड है। पीएसयू बैंक्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं, देन दैट शुड बी द प्रिफर्ड like place to be in, and selectively in the private banking space too. Now let's talk about stocks. So first that we have in the list is Coal India. So Coal India, as you can see, that's a very tight range of base formation, very tight range. So means 360, 380, 85. That's a very narrow range the stock has been holding for quite some time. Of late, there was an attempt of recovery, but it couldn't sustain. This week, it's a decent gains, roughly around 3%. So again, we are set to attempt a breakout. So here, when markets are in consolidation mood, and stocks in certain pockets, they have done exceptionally well, and they are also seeing consolidation. Risk to reward, or identifying the right set of stock for fresh buying is difficult. It's not that simple. So here, at least Coal India is giving you that comfort that it's holding in a very tight range, and possibility of a breakout seems high from the current levels. So Coal India को आप consider कर सकते हैं long side की positions के लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्राइस का चार्ट है कि जिस तरीके से ये कितने हफ्ते, कितने महीने हो गए हैं इसको एक टाइट रेंज में 360 385 के इसी रेंज में, बैंड में ये घूम रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको जल्दी से ये एक मूव, पॉजिटिव साइड का मूव देखने को मिल जाए कोल इंडिया में, राइट। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। सेकेंड स्टॉक फ्रॉम द लिस्ट, sectors which turned out to be loser this week, realty, overall realty. So again, as you can see that there was a trend line hurdle. It tested that zone, followed by this marginal dip, but the base where the 100 EMA is placed, it's very close, and plus the kind of reversal that we have seen in the Nifty Realty Index of late gives us comfort that this dip, this consolidation, or
like this further uh, time that the stock is currently spending is basically a accumulation opportunity, राइट? तो देखिए, दो तरीके होते हैं मार्केट में, कि एक तो हो जाए कि मार्केट में क्लियर आपको हर चीज चलते हुए नजर आ रही हो, जहां पे कि आप कुछ भी बाय कर लें और वो अच्छा परफॉर्म कर जाए। दूसरा होता है कि मार्केट एक क्रिटिकल जंक्चर पे हो, स्मॉल कैप, हम सबको पता है कि क्या कंडीशन है, पोर्टफोलियो में स्टॉक्स बहुत सारे ऐसे भरे पड़े हैं जिनकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो अब एटलीस्ट वो सेम गलती ना करें कि जहां पे हाई लेवल पे कोई अच्छा स्टॉक भी कोई गलत प्राइस पे हाथ में ना रह जाए। तो उसके लिए क्या करना है, जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल मिल रहा हो उन पे फोकस करें। तो ओवरऑल रियलिटी कैसा नाम हो सकता है रियलिटी स्पेस में से, जहां पे कि एक अच्छा बेस बन चुका है और 1800 के ऊपर निकलते ही कंफर्मेशन आ जाएगा कि नेक्स्ट लेग ऑफ मूव शुरुआत हो गई है, और करीब 2000 तक के लेवल्स पहला, उसके बाद फिर शायद उससे भी ऊपर। तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स व्हेन इट कम्स टू ideas. Last on the list, Sun Pharma. So, like we were discussing at the beginning of the presentation that sectors which were sitting on the sidelines earlier, pharma, energy, they have started showing some sign of participation. And Sun Pharma, after this prolonged, almost a year-long corrective phase, is set for a reversal. तो देखिए, जैसे हमने बताया ना कि पहले 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते जितने भी आप वीडियोस जाके देखेंगे ना, एक ही चीज मैंने रिपीट की है, कुछ नया चीज नहीं बोला उसमें। जब भी हमने सेक्टर की बात की है कि मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक्स, इसके अलावा और दूसरी कोई चीज बात नहीं की। और मार्केट की परफॉर्मेंस लार्जली वही रही कि वहां पे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी है। अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है कि फार्मा में, एनर्जी काउंटर्स में आपको इंटरेस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक ही सेक्टर हमेशा नहीं चल सकता ना, थोड़ा सा वो पॉज लेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, तब तक दूसरे सेक्टर का काम बनता है कि वो आए, मार्केट को हेल्प करे ऊपर जाने में, या एटलीस्ट सस्टेन करने में। तो यही चीज फार्मा में दिख रही है कि औरो फार्मा आपने नोटिस किया होगा इस वीक, अगर नहीं किया तो देखिए। ये इसी प्रेजेंटेशन में हमने बहुत बार बात की है, पिछले करीब 2-3 हफ्तों में ही हमने बात की थी औरो फार्मा के बारे में। ल्यूपिन हो गया, अब सन फार्मा की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 1 साल हो गया है करेक्शन का, और अब एक रिवर्सल के लिए ये तैयार है। तो यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पोजीशंस इन द कमिंग वीक्स। सो नेट नेट निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स व्यू पॉजिटिव है, 25,650 निफ्टी में, 55,700 का जो ये जोन है, 700 कह रहा हूं मैं, 55,200 का जो जोन है, ये आपका बैंकिंग इंडेक्स में, राइट? एज लॉन्ग एज वी आर मेंटेनिंग अबव दिस key areas, right? This 25,650 and 57,200 maintain positive bias. We are set for a new high. But sector selection, stock selection could be different because some of the sector they have already done well, so there could be some consolidation, right? So energy, pharma, alongside with the performing sectors, is something that you should be focusing on. Avoid किसको करना है? Then FMCG is still, looks mixed to us. Small cap, still there is no sign of recovery. So loss making position को avoid ना करें. That is something which is important. So yeah, largely we have covered everything with this. Now let's do a quick feedback poll and then we can start with the Q&A. सो प्लीज फिल इन योर फीडबैक। कोई भी आपका फीडबैक है कैसा भी, आप उसको फिल करके शेयर कर दीजिए। और उसके बाद जो भी आपका सवाल है, क्वेश्चन मार्क करके बटन होगा आपकी स्क्रीन पे, उसको आप प्रेस करके लिख के पूछ सकते हैं अपने सवाल को। प्लीज fill the feedback and then you can start posting your questions. Those who are done with the feedback, they can start posting their questions.
All right, so we are almost done now. So let's do the question and answers. All right. Okay, the first question that we have on IT pack. So how one should trade the IT pack. Uh, so see, IT as a pack, we are seeing very mixed performance, but the good part is that largely are either participating or rebounding. At least they're not falling now. Means large cap names, mid cap names, stocks like TCS, Infosys, HCL Tech, particularly, they have done well. Persistent from the mid cap IT basket is holding very firm. But see, it's not about maintaining the ground. It's about outperforming the markets. So IT is definitely, I would say, pillar for stability. But for short-term trading positions, we have sectors like metal, auto, PSU banks, now energy and pharma, wherein we are seeing healthy buying interest and strong price moves also. So if the view is short term, then IT, I feel, is something that you should refrain, for short term trading perspective. But yeah, for the market stability, it is good that at least they are holding strong. Okay, so Nilesh, we have 1 or 2 years view, but the agenda of this presentation is largely that how we should prepare for the shorter duration. But yes, in case if somebody is like planning for 1 to 2 years of kind of time horizon, then banking, financial, cement, uh, you know, which looks positive to us. Then some of these stocks from the agri-chemical space, wherein we see investment opportunity. Selectively, in fact, from the IT pack also one can choose if the view is more than a year or two, right? But if you are planning for shorter duration, then it should be in sync with what we are seeing in the markets and as per the trend. Thank you. Next. Metal related stocks largely. So be it copper, steel, they all are doing well. Next question is on metal counters largely. So copper related stocks and all. So like what we've shared, this commodity basket has done exceptionally well, including the base metals, and which is reflecting in the stock prices also. There could be bit of consolidation, volatility basis the global clues, because metals are largely driven by the global clues. But tone trend looks positive to us. So selectively, one can continue to look for buying opportunity, but never forget that they are a very high beta in nature, right? जब ये गिरते हैं तो ये गिरते भी उतने ही स्पीड से हैं, right? Because they're cyclical in nature. So if you are very good at maintaining stop losses, definitely you can continue to trade metal counters even at current levels. Dinakar Patilji, you can share this query if you are already associated with us for the Algo platform. आप
हमारे सोशल चैनल पे अपनी डिटेल शेयर करके, या फिर आप डीएम कर सकते हैं हमको, on the Twitter channel, wherever you feel comfortable. And if you are associated with us, we'll share you all the details related to the Elko platform. Okay, next we have some of the stock specific queries. Snehansh's query on Biocon. That Biocon has made a new 52-week high after a long time. So yes, that is true. In fact, it's a very prolonged underperformance that the stock has underwent. And after this recovery, at least this time around, with the kind of price action and volumes we are seeing, possibility of extending this move is high. And it's not that the record high was 480 and we are going to scale to those levels just like that. There could be pauses, because what last time also we were at around these areas and then it fizzled out. But this environment looks comparatively better, means the kind of move that we are seeing so far with volumes. So it's okay to hold your long positions. 390, 400 is basically the base zone. So that should be the area where you should think about putting your stops, with 440, 450 being the first hurdle area and then around the record high zone. Okay. So Infosys buyback. So again, it's the maths basically. See, at the end of the day, how much is going to be the acceptance ratio, and uh, how much it translate you to actual earning if you actually tender it, uh, and post tax, how much you save on that. So it's all basis on certain uh, like our own calculation, that you make some kind of mass wherein you see profitable position, but it was not. So it's okay to hold this stock for long term. This buyback effect is something which we were not even anticipating. Means it was a normal recovery for most of the IT names, and that is what we were seeing in the uh, Infosys also. So right, you can continue to stay put if the view is long term. Need not to worry about this buyback thing. Okay, next we have Tarun Sharma on Varun Beverages and Dani Bilma. So VBL is basically struggling a bit. No doubt, uh, of late there was a very strong recovery attempt, but it couldn't sustain. Means it almost reclaimed the long-term averages, but it could not hold. So as of now, there could be a possibility that it might continue to trade lackluster in this range, roughly around 450 to 475 in the near future, and then maybe around 490. So as of now, you can continue to stay put with 450 on the closing basis should be the stop loss if the view is short term. Adani Wilmar is an underperformer basically. AWL. Yes, it's still struggling around its multi-month lows. Though we are seeing sign of a rebound also, but it looks very upside looks very capped. Means around 290, 300 we have multiple resistances. So in case if the view is short term, you are already stuck, you may consider holding it with strict stop at 265, and around 290, 300 you should try to exit your longs. Okay. Which stock looks good in NBFC space? So NBFC space, see, Bajaj Finance definitely looks upbeat. Then we have Chola Finance, uh, wherein we see strength, and the gold, related counters, Muthoot, Manapuram. Uh,
L&T Finance, they have already done exceptionally well. So there could be some consolidation. So yeah, largely these are the big names. Bajaj, Chola, Shriram, again a strong mover. So there should be some consolidation, but overall they looks comparatively stronger. Okay, Johan has question on Hudco. Hudco is actually stuck in a range, 220 to 45. So we are closer to the base. So again, it might make an attempt of a rebound, but for any momentum, we need a decisive close above 245. So if you are looking for a strong up move, then wait for a close above 245. Otherwise, it might continue to trade lackluster. So if you are looking for very shorter time horizon, then it's prudent to avoid. Right. So yeah, largely we have answered all the queries. Couple of more of stock specific queries that definitely we can answer. If you are associated with us, you can share those queries through the branches, business partners, right? So thank you everyone. Today is 14th. Next week, same time, same place, we'll connect again, or maybe in the new format.